God bless you, my dear students. Today I am going to start worksheet 6. First question is simplify. 4 to the power 4 into 5 to the power minus 4. First base is 4, second is 5. First power is 4, second power is minus 4. Base भी इक्वल नहीं है, पावर भी इक्वल नहीं है. So what should we do? Remember, x to the power minus m can be converted as 1 by x to the power plus m. So 5 to the power minus 4 can be written as 1 by 5 to the power 4. Now bases are different but their powers are same. We have a formula x to the power m into y to the power m equals x into y to the power m. We will apply here 4 into 1 by 5 to the power 4. Now 4 1 ja 4 and by 5 4 by 5 to the power 4. 4 to the power 4 means 4 into 4 into 4 into 4 4 times. Similarly 5 to the power 4 means 5 into 5 into 5 into 5. 4 4 ja 16, again 4 4 ja 16, 16 into 16 256. 5 5s are 25, 5 5s are 25, 25 into 25 625. Now 2 to the power 2 into minus 1 by 3 to the power 2. Powers are same, bases are different. So x to the power m into y to the power m equal x into y to the power m. We will use this formula. Bases will be multiplied. Power will be same. 2 1 ja 2, 2 by 3 but minus 2 by 3 to the power 2. Power 2 means minus 2 into minus 2 and 3 into 3. Minus minus plus 2 2 ja 4, 3 3 ja 9, 4 by 9. Next, minus 2 by 3 to the power 3 into minus 3 by 5 to the power 3. Bases are different but powers are same. So bases will be multiplied and power will be same. Here 3 1 ja minus minus plus 2 by 5 to the power 3. Power 3 means 2 into 2 into 2, 5 into 5 into 5. 2 2 ja 4, 4 2 ja 8. 5 5 ja 25, 25 5 ja 125. 8 by 125. Now 1 by 2 to the power minus 2 into 2 by 5 to the power minus 2. Bases are different, powers are same. Bases will be multiplied. 1 2 ja 2 or you can cancel 2 1 ja 2. 1 by 5 to the power minus 2. माइनस 2 को प्लस करना चाहते हैं अगर एक्सपोनेंट को तो 1 by 5 को 5 by 1 लिखेंगे. 1 लिखने की जरूरत नहीं है. सो इट इज 5 to the power 2. 5 5s are 25. You can do it also like this. पहले हम पावर को प्लस कर लेते हैं 2 by 1 that means 2 to the power 2. Here 5 by 2 to the power 2. 5 by 2. Both powers are same. Bases will be multiplied. 2 into 5 by 2. 2 1 ja 5 to the power 2. 5 5s are 25. Next, minus 5 by 6 to the power 4 divided by minus 7 by 6 to the power 4. Look here, bases are different but powers are same. So we have a formula x to the power m divided by y to the power m equals x divided by y to the power m. Right here, both bases minus 5 by 6 divided by minus 7 by 6 to the power 4. Remember whole power. Now डिवाइड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं पहले मल्टीप्लाई में, इसके बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं. सो माइनस 6 by 7. नाउ 6 1 जा एंड इट इज माइनस माइनस प्लस 5 by 7 to the power 4. Power 4 means 4 times. 5 5s are 25, 5 5s are 25. 25 into 25 625.
7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 into 49, 2401, 2401. Minus 2 by 3, it is 3 to the power minus 5 into minus 3 by 2 to the power minus 5. Bases are different, powers are same. So यहाँ पर दो तरीके से काम कर सकते हैं. पहले हम पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम कर सकते हैं. दोनों बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर -5 रखेंगे. यहाँ हम पावर को प्लस कर रहे हैं पहले, सो रेसिप्रोकल -3/2, 2/3 माइनस टू द पावर 5. बेसेस आर डिफरेंट, सो मल्टीप्लाई देम, पावर्स विल बी सेम. 2 1 जा 3 1 जा, माइनस माइनस प्लस, 1 टू द पावर 5. 1 का पावर कितना भी दो, 1. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that 3 to the power 2, 3 square into minus 4 square equals minus 12 to the power 2x. Look here, powers are same, bases are different, so bases will be multiplied, power will be same. Right hand side, write as it is. Now 3 4s are 12, minus 12 to the power 2, minus 12 to the power 2x. Since bases are same, so their power will be same. Remember, it is minus 12 to the power 2 equal minus 12 to the power 2x. Bases are same, leave it. It will be 2x equal to. This is called equating powers. जब बेस इक्वल होते हैं तो उनके पावर भी इक्वल होंगे. We can write like this, 2x equal to. Now 2x means 2 into x. So x equal 2 divided by 2. 2 1 ja 2. X equal 1. Next, minus 3 by 2 to the power 6 into 4 by 9 to the power 3 equals 1 by 2 to the power 3x. Here base is 4 by 9, power is 3. Here base is minus 3 by 2, power is 6. Bases are different, powers are also different. But look here, 6 can be written as 2 into 3. Now, this can be written, powers are multiplied, so this can be written as minus 3 by 2 to the power 2 to the power 3. Powers are multiplied, we know that. 2 3 जा 6. ऊपर से नीचे, यहाँ नीचे से ऊपर की ओर हम जा रहे हैं समझने के लिए. So we can write like this, minus 3 by 2 to the power 2, power 2, minus minus plus, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 by 4, माइनस हो जाएगा प्लस, 3 का पावर 2 होने से 9 और 2 का पावर 2 4, होल पावर 3. नाउ पावर्स आर सेम, bases are different, so bases will be multiplied. 9 by 4 into 4 by 9, 4 1 जा 9 1 जा, 1 to the power 3. राइट में जैसे वैसे लिखें, नो चेंज. नाउ लुक हियर, 1 to the power 3 means 1. रिमेंबर हियर, राइट साइड में बेस है 1 by 2, लेफ्ट में बेस 1, पावर भी 1. हम जानते हैं कि इक्वेटिंग पावर अगर करना चाहते हैं तो बेसेस शुड बी सेम. वी हैव ए फॉर्मूला, x to the power 0 equal 1. किसी भी नंबर का पावर अगर 0 लिखेंगे तो 1 होगा. हम बेस चाह रहे हैं 1 by 2, राइट में क्या है बेस 1 by 2, तो हम 1 by 2 यहाँ भी बेस लिख देते हैं. 1 by 2 अगर बेस है और पावर हम 0 करते हैं तो ये 1 होगा. दैट मीन्स 1 कैन बी रिटन एज, 1 को हम लिख सकते हैं 1 by 2 का पावर 0. यहीं पर ध्यान देना है. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि दोनों तरफ का बेस सेम हो जाए और हम पावर को इक्वेट कर सकें. सो नाउ इक्वेटिंग पावर्स, 3x इक्वल 0, 3x मीन्स 3 इंटू एक्स, x इक्वल 0 डिवाइडेड बाई 3, 3 0 जा 0, x इक्वल 0. नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 3, 4 by 5 to the power minus 2 divided by minus 4 by 5 to the power minus 2. Powers are same, bases are different. Divide करना है, so bases will be divide. 4 by 5 divided by minus 4 by 5 to the power minus 2. राइट साइड में ऐसे लिखेंगे 1 का पावर 3x. नाउ हियर डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई, माइनस 4 by 5 को रेसिप्रोकल, माइनस 5 by 4, पावर माइनस 2, कैंसिल, 5 1 जा 4 1 जा.
इट इज़ -1, -1 का पावर -2, उल्टा कर दो, 1/-1 पावर प्लस हो जाएगा, माइनस से डिवाइड करने पर -1 ही आएगा, पावर 2 इक्वल्स 1 to the power 3x। इन द लेफ्ट हैंड साइड माइनस माइनस प्लस, 1 का पावर 2 1, लेफ्ट का बेस 1 पावर 1, राइट का बेस 1 पावर 3x। सो बेसेस आर सेम, पावर विल बी सेम। इक्वेटिंग पावर्स 3x equal 1, that means x equal 1 divided by 3, 1/3। Question number 4, 9/4 to the power 3 into 8/9 to the power 3 equal 2 to the power 6x। Look here, powers are same, bases will be multiplied, 4 1 जा 4 2 जा, 9 1 जा 9 1 जा, 2 1 जा 2, 2 to the power 3, in the right hand side 2 to the power 6x। इक्वेटिंग पावर्स 6x equals 3, x को ही रखो, 6 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3/6, 3 1 जा 3, 2 जा 1/2, x equal 1/2। Now next, 15/4 to the power 3 divided by 5/4 to the power 3, powers are same, so it will be 15/4 divided by 5/4, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रेसिप्रोकल, 4 1 जा 5 1 जा 5 3 जा, 3 1 जा 3, 3 to the power 3, in the right hand side it is 3 to the power x, equating powers x equal 3। This is the answer। Okay my dear students, I hope you understood whatever I taught you in this video. So like this video and subscribe my channel. Thank you.